it was all based on the Google searches. I was looking for an architect plus an interior designer who could take a project from the beginning to a key handover project. Since I am based out of the United States, the house location is in Kapurthala, Punjab, so I needed someone who can take the project as his or her own project, as his or her own house. So I reached out to Space Race, I called them, and the beginning was not really good, to be honest. They did not take me seriously because I did not have any budget and I did not have anyone to guide me the right way to approach any firm, for that matter of fact. So they kind of ignored my requests or my requirements. So I started with someone else. I used one of their projects, Space Race project, as a reference, which was one of my favorite projects, to be honest. And we started with someone else locally there, which was a chaos. And then I spoke to the main architect here at the firm at Space Race, Devi. A few conversations back and forth, and for some reason, somehow he decided to take a project in the middle of everything. I think, like they say, chaos brings an opportunity. So he probably saw some opportunity in this chaos. And it's been little more than 8-9 months now that we are on this project, and then we got another on-site consultant engineer from his site, Sachin, who is sitting right next to me, and blessing in disguise, to be honest. So they both took this project when I was offline somewhere else, with the time zone difference. When it's morning here, it's night time for me. So the communication was not as easy as it might look like in this so-called digital world. It was never that easy. Despite they understood all my requirements based on the messages, offline messages, and few phone calls every now and then radio silence for weeks because they knew what I need. Long story short, yes, the beginning was a little bit, let's just say, with some turbulence. It was a little difficult to convince them to take my project, but when they took over the project, it was fine. It took some time to straight line few things, but over and all, I would definitely recommend these people, not because they're doing my project, but they're good enough. That's why I am doing the project with them. So yeah, I guess you all need to check Space Race Architect. Go and visit their sites, talk to them, come and talk to them. I think it's easier and it's more convenient if you come to their office and talk to them rather than phone calls and emails and stuff. It's always easy to talk to the person in person. So come and visit. So you are here for the first time, but how was your experience right in US when we were on Zoom calls and we were doing Zoom? It was easy communicating. The main thing is communication, right? The main thing is they need to understand what I'm fussy about things. I'm very fussy about things. So the main thing was the communication. You're not that fussy, I'm telling you. Tell this to my parents. I'm very fussy about things, right? And I'm fussy about people in my life, right? So I take time to decide things. So communicating was easy. Communication was more important to understand my thought process. So how is your experience now? It is good. Like I said, it's blessing in disguise. Can you explain something after changes? What kind of light and air? Exactly. Like so, for example, like I said, so we I'm not going to name the names here. So we started with a local vendor there, local architect, and it was pretty much close. Please don't take names. That's what I said. I'm not at all. That's what I said. I'm not going to name the names. Right. That's why I keep using the word local. Yeah. And so it was very closed property, or the 3D ideas and all those things. So it looked very close and small in size, even though it's a decent size plot. I'm not going to say it's huge, no, but it's not small either. It's a decent size plot, but the way he planned or the layout was not really ventilated, if I can say. Then we made few changes, or should I say his team made few changes, and if someone can go and visit the site, if there is a way I could make it happen, it's absolutely different now. It's completely different. Even though starting or taking the project not from the beginning, but in the middle of chaos, if I can say it again. So it's ventilated, there's enough light in the house. Even now the rooms look bigger.
that's the basic thing. Like the whole, because this is for my parents and they are getting old, so the whole idea was they should have a basic decent life, right? There should be basic lighting. There should be basic airspace, ventilation. So that was the whole idea, because my parents are getting older, and that's the basic need for any old person. So which I can see now is happening. There is a lot of glass. I love glass, right? Instead of straight walls, I love glass. It's not those matchboxes that we see in Delhi or Bombay. It's different. It's classy, at the same time it's very elegant. So not just my property. I guess you guys should visit and see all of his projects, and you guys will like it. You guys will definitely like it. Thank you so much, Kunal ji. Thank you very much. Thank you so Sachin much as well. I guess for your kind word. Yeah. And this man as well is a thankful to Sachin, who is taking our project there at their own site and making things possible actual there at site. Especially when I'm away. So this is the first time I'm actually meeting them in person. In this video, I would like to explain you guys. I'll talk in Hindi because more of our viewers are from India also. So your Kunal ji has explained it very well in English. So I'll explain what happened. Kunal ji called me up. Actually, he called my team, so I'm not the first person to receive calls every time. So Kunal ji called. So he said he wanted to get project done and all that. So team couldn't take him seriously because he was like, I'm not aware about my budget and all. So they thought कि पता नहीं इन्होंने पैसे खर्चने भी है कि नहीं, because हमारे जो रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं मोर ऑफ हाई एंड होते हैं, तो उसमें ही होता है कि पता नहीं 30-35 लाख का शायद बजट होगा. तो कहीं ना कहीं वो स्टार्टिंग में मिसकम्युनिकेशन रहा और फिर इवेंचुअली ही स्टार्टेड प्रोजेक्ट. इनको हमारा प्रोजेक्ट बहुत पसंद था. वन ऑफ आवर प्रोजेक्ट इज सरप्राइज हाउस. तो अगर कहीं उन्होंने नहीं देखा होगा तो वो यूट्यूब पे आपको सरप्राइज हाउस के नाम से दिख जाएगा. सो इनको वो बहुत पसंद था. वहाँ पे इन्होंने लोकल आर्किटेक्ट को दिखा के शायद शुरू कराया, जो इन्होंने मुझे आज बताया, मुझे नहीं पता था. सो शॉर्ट कन्वर्सेशन में लेके जाऊंगा. एक्चुअली प्रोजेक्ट जब मेरे को इनकी और मेरी बात हुई तो प्रोजेक्ट मिडवे था, स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका हुआ था. बट और हम मिडवे प्रोजेक्ट्स बिल्कुल बंद कर चुके हैं बिकॉज उस वक्त क्लाइंट का माइंड प्रिपेयर्ड नहीं होता कि किस रास्ते पे जाना. बट एनी हाउ आई डोंट नो हाउ मिस्टर कुणाल कन्विंस मी, और he was strong enough to convince me. He said नहीं, प्रोजेक्ट तो ठाकुर साहब आप ही कर रहे हो, no matter what, tell me what do you want. मतलब he was like this. तो मैं कहा नहीं सर, मतलब अगर आप इतनी स्ट्रांगली बोल रहे हो, जब आप दूसरी तरफ से किसी का कॉन्फिडेंस इतना स्ट्रांग देखते हो ना, आपका मतलब ये वो बात है कि यार he is loving me so much और मैं कैसे ना इनको प्यार करूँ ना, काइंड ऑफ. तो मैंने क्या किया कि नहीं यार चलो ठीक है, आप इतने मतलब स्ट्रांगली मेरे को कह रहे हो तो आई डू इट नो मैटर व्हाट. बट एक शर्त है, यू हैव टू लिसन मी. और प्रोजेक्ट मतलब जैसा मैं चाहूँ वो वैसा निकल आए, ये ना हो कि वो जो उसमें गलतियाँ वो मैं ठीक ना करता हूँ. तो ही सेड नहीं यार, यू स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट. मैंने वो प्रोजेक्ट शुरू किया. ही वॉन्टेड ओनली इंटीरियर्स, बट मेरा मानना है, मैं आप लोगों के लिए ये बात करूँ, कई बार कई लोगों के साथ ये कॉन्वर्सेशन होती है, आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स गो हैंड बाय हैंड. मतलब ये नहीं हो सकता आर्किटेक्चर अलग है इंटीरियर्स अलग है. अगर हम उसको ऐसा ट्रीट करेंगे तो इंटीरियर्स इज ओनली मेकअप, बट इंटीरियर्स इज नॉट ओनली अबाउट मेकअप. आर्किटेक्चर अगर अच्छा है तो इंटीरियर्स अपने आप सुंदर लगने लग जाता है. अगर एक कमरे का आउटसाइड साथ कनेक्शन अच्छा है, उसका व्यू अच्छा आ रहा है, तो इंटीरियर्स वैसे ही सुंदर लगने लग जाते हैं. सो इनका प्रोजेक्ट में हमने वो वॉल्स वगैरह रिमूव करनी शुरू की और कई जगहों पे मतलब बेडरूम्स में विंडोज नहीं दी हुई थी. मतलब ऐसे मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ लाइट और हवा का. लाइट एंड एयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन बिल्डिंग, और these are things which make building go, they add life to that space. तो
लाइट, हवा, प्लांट्स, तीनों चीज़ों को कनेक्ट किया, बिल्डिंग में लाइफ ऐड की। तो और मतलब ही वॉज इन यूएस और कॉन्वर्सेशंस कई बार, बिकॉज टाइम डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता था इंडिया और यूएस का, तो हमारी मीटिंग्स कई बार डिले हो जाती थी, मतलब 8 आवर्स 9 आवर्स वन डे भी, बट ही वॉज गुड इनफ टू अंडरस्टैंड दैट। और हमारा जब भी मीटिंग होनी तो ही वॉज वेरी हैप्पी कि यार लाइट आनी शुरू होगी। और जब मैं पिक्चर साइट पे आके जब भी सचिन जो हमारे वहाँ साइट इंजीनियर है हमें फोटोग्राफ भेजता था, तो मतलब दिल को तसल्ली मिलती थी कि वो स्पेस में वो लाइफ ऐड होनी शुरू हो गई है। तो आज जब इनसे मैं बात कर रहा था कि वो क्या सारा एक्सपीरियंस रहा, तो he said नहीं, I had a wonderful experience with you guys, your team. It made my life easy. If I have to sum it in one line, yeah, it made my life easy. She is our customer care representative. तो मैंने इनसे फीडबैक लिया कि उसने आपका पूरी जर्नी में हेल्प प्रॉपर की, कोई दिक्कत तो नहीं आई। तो he said नहीं, आपकी टीम ने मेरे को पूरा सपोर्ट करके रखा हुआ है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सो वी हैव बिग टीम, एडमिन डिपार्टमेंट है जो नॉन टेक्निकल काम होते हैं वो भी ध्यान रखता है कि क्लाइंट को कोई दिक्कत ना आए। कई काम होते हैं जो सिर्फ नंबर्स भेजना। शुरू में सॉरी टू कट यू, ये सब चीज़ें कभी कभी इंपॉर्टेंट नहीं लगती, एडमिन कांटेक्ट करना, फीडबैक्स लेना, ये सब चीज़ें, चलो फीडबैक तो एंड पॉइंट हो गया, बट शुरू में विद इन थ्रू आउट द प्रोजेक्ट एज वेल ये चीज़ें इंपॉर्टेंट सुनने में प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले नहीं लगती इंपॉर्टेंट कि ठीक है ना यार, क्या आर्किटेक्ट का काम है 4 दीवारें खड़ी करनी है और इंटीरियर वाले का काम है 2 गमले लगा देने हैं, फटाफट करो एंड रफा दफा करो, बट इट इज़ नॉट एज ईजी एज आई मेड इट साउंड टू बी ऑनेस्ट। ये सारी चीज़ें कि हर दूसरे तीसरे दिन या एटलीस्ट हर 10 दिन में किसी का कॉल आना कि यू नीड एनीथिंग, स्पेशली जहाँ पे सिचुएशन मेरी जैसी हो कि मैं कहीं और हूँ, ठीक है, एंड मैं ना साइट, एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने कभी साइट देखी भी नहीं थी पहले। ही इज हियर इन आवर ऑफिस फॉर द फर्स्ट टाइम, पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट टू अब तक ही वाज इन यूएस, आज आए हैं तो वी हैड कॉन्वर्सेशन की कैसा रहा। और आई वाज जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि मेरे स्टाफ ने कहीं दिक्कत वगैरह तो नहीं बीच में आई। नॉट जस्ट उदय फर्म, अगर आप आई एम नॉट सेइंग, अगर आप किसी और की भी फर्म यूज़ करते हो तो मेक श्योर जब वो लोग ये सब चीज़ें आपको बताएं कि सर ये सारी फीचर्स हैं, ये रिक्वायरमेंट्स हैं, प्लीज़ गो फॉर दैट। ऑन साइट इंजीनियर, ऑन साइट कंसल्टेंट, रेगुलर टच विद योर आर्किटेक्ट, सेम फर्म से आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग, लाइक उदय सर, ये सब चीज़ें आई नो आउटसाइड वर्ल्ड में नॉन टेक्निकल लोगों को नहीं समझ आती, इट्स डिफिकल्ट, अंडरस्टैंडेबल, बट दीज आर इम्पोर्टेंट। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, शुरू में मेरे को भी नहीं समझ आई थी कि ऑन साइट इंजीनियर क्यों चाहिए अपने को, जब घर वाले देख ही रहे हैं, ठीक है, हर चीज़ फोटोज ही तो भेजनी है, तो घर वाले 4 आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, फोटोज वो भेज देंगे, बट इट इज़ नॉट जस्ट कि 4 फोटो भेजनी है और 4 दीवारें खड़ी करनी है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तो अगर कोई आर्किटेक्ट आपका बीट उदय बीट एनीवन XYZ ये सब चीज़ें आपको बोले, प्लीज़ गो फॉर दैट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो होपफुली आप लोगों के लिए ये वाला वीडियो या ये मेरा फीडबैक और काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल कुणाल जी का हमारे साथ आपको पसंद आएगा। जर्नल ये क्वेश्चंस काफ़ी लोग करते थे, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ इस टॉपिक पे बात की है, और बिल्कुल अनप्लान्ड वीडियो है, शायद मेरे टेबल पे खलेरा वलेरा भी वैसे ही पड़ा हुआ है, आई एम सॉरी फॉर दैट। जैसे हम काम करते हैं वैसे ही, और जनरली कहते हैं डेस्क साफ़ सुथरा होना चाहिए, बट आई एम सॉरी, जैसा था काम कर रहे थे जैसा था वैसे ही हमने शूट करना शुरू कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।